Hi everyone, Namaskar. So today Nifty managed to close above this support which became a resistance when the price was here. So that's a plus. And if we go to hourly, then we can see the structure so far is 3 waves. This is 1, 2, 3. Now we have to see whether this 3 wave turns into a 5 wave rise or remains a 3 wave and starts falling again. If it is a 3 wave, then likely this down move will continue on the downside. But if it becomes 5 waves and on top of it we also get a positive weekly close by end of this week, then this combined information could help us determine whether this down move is done for now and the pullback on the upside has started, right? So if these two things happen, we get a 5 wave rise in hourly and also a positive weekly close, then we will start looking for a potential pullback. And how large that pullback can be, we can simply take a Fibonacci retracement of this. So if we take a minimum retracement, that is 24,846, which is 38.2%. तो ये आपका मिनिमम लेवल है कि इतना तो होना ही चाहिए, बट चांसेस आर इससे ज़्यादा ही होगा. 50% इज़ 25,000 एंड 61.8 25,160. तो कुल मिला के 25,000 एक आपका रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे. 50% रिट्रेसमेंट भी है वही सेम लेवल. तो चांसेस है कि 25,000 रीटेस्ट हो, 25,000 के थोड़ा बहुत ऊपर भी चली जाए प्राइस, बट 50 to 60%, this is what this zone I think is likely what will be tested as part of this pullback. And ये pullback जब पूरा हो जाता है तो वहाँ से प्राइस शुड आइडियली रिवर्स एंड गो बैक डाउन. तो अभी ये जो मूव अभी हमको दिख रहा है, अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये मूव कंप्लीट हो गया बिकॉज वी हैव टू गेट अ पॉजिटिव वीकली क्लोज. बट अगर हमको अभी टेंटेटिवली लेना है कि इसको हम कैसे मार्क करें इस पूरे मूव को, तो अभी ये वेव स्ट्रक्चर जो बना है ये आपका 15 वेव हो चुका है. तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So basically this is a corrective count. So I'm not really inclined to mark it, but we can do one thing. We can basically mark it as A or W. So the reason A or W is because it might still have one more leg down and it will become 17 leg, then it will be a motive structure. So that would make it A. And if it remains 15 waves, then it's likely W. So it doesn't really matter because in both the cases we expect it to do something like down, up and down. So it could be like A, B and C, or it could be like, W, X, Y. So it doesn't really matter what exact structure this is. So we can keep it for now A, W, and we can also have something like B or X. So which is what we will expect once this is done. And since it is closed above support, so that kind of makes you wonder कि okay, maybe this thing is done, because एक बार नीचे क्लोज आया इसके, लेकिन हम वापस से ऊपर आ गए इमीडिएटली द नेक्स्ट डे. तो चांसेस है कि शायद ये टेस्ट जो होना था इसका हो चुका है और अभी ये ब्रेक नहीं हो रहा है एटलीस्ट इस डाउनफॉल में. मे बी ऊपर जाने के बाद जब दोबारा प्राइस नीचे आएगी, दैट टाइम इट माइट कन्विंसिंगली ब्रेक. सो दैट्स द स्ट्रक्चर राइट नाउ. एंड ओवरली में तो मैंने जैसे मेंशन किया था कि ये स्ट्रक्चर हमको देखना पड़ेगा. अभी तक ये 3 वेव का लग रहा है. तो लेट्स सी इफ इट बिकम्स 5 वेव्स और इट रिमेन्स 3 वेव्स. चांसेस हैं कि 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है मूव. इट कुड बिकम 7 waves, 9 waves. So basically the idea is to kind of see whether this evolves as a motive structure or a corrective structure. तो वो जो भी बनेगा उसके हिसाब से that will help us determine कि हाँ ये pullback अभी हो रहा है स्टार्ट
या फिर अभी ये डाउन मूव ही कंटिन्यू होने वाला है. सो आई गेस दैट्स द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स एंड वी विल नो मोर एज दिस वीक प्रोग्रेसेस. तो तब तक लेट्स सी हाउ दिस प्रोग्रेसेस, हाउ दिस इवॉल्व्स एंड वीक के एंड पे क्या स्टेट बनता है. वीक में हमको क्या वापस रेड कैंडल मिलता है एक और, या फिर एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है. तो उसके हिसाब से वी विल हैव मोर क्लैरिटी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस अपडेट. विल सी यू टुमारो. थैंक यू.